Hi everyone, hope I am live and you can see me as well. Let me check if you can hear me. I think should be live now. So thanks for tuning in. If some of you have already kind of tuned in to this Wednesday 1 p.m. YouTube session, and we will discuss absolutely we'll discuss about where is the market strength as well as okay, Saurabh is saying audible. Fantastic, Saurabh. Thank you so much for joining and being the first one. Yes, lovely, and thank you so much for confirming that you can hear me, which has been fantastic. So, okay, so we'll keep it uh, to the topic, and the topic is where is the market strength and what next with our rebalance, right, in terms of our baskets. We'll also take questions as we usually do at the end of the session. Try to kind of put the questions in your query log rather than on the YouTube chat. Hi, good afternoon, Kaushik. So that what we also do with those questions, we ultimately train our machine, train our model to understand the kind of questions you ask so that we can create some FAQ documents, we can create some help articles to answer repeated questions. So try to kind of, I think my team, maybe they might be tuned in, I'm not sure. I'm in a different room right now. I'm sure the team will post the link again in the YouTube. They have already posted in the community IFC. I see that. Okay. मार्केट की स्ट्रेंथ कहाँ पे है एक बार रिव्यू कर लेते हैं. मार्केट की स्ट्रेंथ तो आई थिंक हमने बहुत अच्छा मतलब वी हैव डन अ गुड रिव्यू विद आवर सब्सक्राइबर बेस दिस काइंड ऑफ वीकेंड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट कहाँ पे है. मैं एक बार मार्केट्स को समझता हूँ, वैसे देख रहा हूँ मार्केट कैसा चल रहे हैं. आई थिंक मार्केट्स तो आज अच्छा ही कर रहे हैं. मार्केट्स तो काफी दिन से अच्छा ही कर रहे हैं. आई थिंक हमारे मार्केट्स यूएस मार्केट से कोई कोरिलेशन नहीं आ रहा, राइट. आई मीन दुनिया कहीं चल रही है, हम कहीं चल रहे हैं. ये बात अच्छी लगती है. लास्ट ईयर भी अच्छी लगती थी जब हम कहते थे कि वी आर ऑन अवर ओन काइंड ऑफ डायरेक्शन विच इज काइंड ऑफ कमिंग इनटू एक्शन नाउ अगेन. उसका एक बड़ा रीजन होता है कि जब आप देखते हो कि एफआई फेवरेट स्टॉक्स आर attracting money flow from FIs. You know, the DIs have the opportunity to give back the same companies, which they kind of maintaining all this while in terms of protecting the downside. Uh, so large cap, I mean, chal rahe hain. I mean, as simple as that, right? Large cap में movement आ रहा है. But once the market settle in terms of the इक्विलिब्रियम जब बराबर बराबर आ जाएगा कि हाँ एफआई का पैसा आ रहा है एंड डीआईएस भी डाल पाएंगे दोबारा से पैसा, then you will see all of your mid cap and small caps also doing good. We have seen that how the prior I mean earlier called wealth waves or the India's financial growth theme, I think they're doing fantastic, right? I mean, what is recovery we have seen in the last 2-3 days alone, 3-4 days and 1 week alone in terms of that basket. So that really shows, you know, the underlying theme of capital markets, the kind of NBFCs and private banks and all of that. So and in line of that, I think we are seeing good markets all of these days. अमित जी पूछना चाहते हैं कि जेंसोल जैसी कंपनी हमारा सिस्टम कैसे अवॉइड करता है, प्लीज डिस्कस. आपने को मैंने एक बार अपना प्रोसेस समझाया था. आई थिंक आई शुड नॉट टेक दिस क्वेश्चन, अदरवाइज होगा कि मैंने जो क्वेरी लॉग में बोला वो तो आपने पूछा ही नहीं. अमित जी आपको अपना क्वेश्चन थोड़ी सी मेहनत करके डालना पड़ेगा क्वेरी लॉग में. लेट मी जस्ट शो यू वेयर इज द मार्केट स्ट्रेंथ सो दैट वी आर नॉट away from the agenda first, then of course I'll answer questions. अगर आपको मान लो क्वेरी लॉग एक्सेस नहीं हो पा रहा है for any reason, anyways I'll answer. So एक बार डिस्कस कर लेते हैं. ये डेटा मेरे पास कल क्लोजिंग तक का है. जो लोग मेरी वीकली यूट्यूब में वीकली जूम सेशंस या टीम मीटिंग्स में आते हैं उन्हें पता है कि आई काइंड ऑफ शो दिस. जो नहीं आते उनके लिए है कि वी हैव सीन दैट हाउ द क्वाड्रेंट इज नाउ कमिंग एंड शोइंग सम स्ट्रेंथ. हम इस टॉप बॉटम पे थे एक जमाने पे, नॉट वेरी फार. All of the sectors were in the last quadrant of the last quadrant. Strongly bearish का भी जो first quadrant था हम उसमें थे. सब कुछ निकल गया है वहां से, सिर्फ इतना सा बचा है. EV and pharma is not moving really, digital, metal.
but then you see things are moving from here to here, from here to here, from here to here, which is non-cyclical consumer consumption. Even it has moved to here to here also now. The rural and mid small financial is doing really picking up. FMCG is really picking up. Nifty bank, private bank, absolutely, showing great strength. And you see financial services. This is the topic of the down. This is Bank Nifty, right? You see Bank Nifty making all lifetime highs and all that good stuff. And that is where you have seen the recoveries you have seen in your baskets over the last 1 week, 2 weeks, 3 weeks. So this is where the market currently stands. I have done a great detailed video on the weekend, which is also available as a private video on YouTube. I will also post that video in the manager update. So if you're a subscriber, of course, you can access that detailed video where we have talked about all of the different sections of this tool, not just the sector momentum, but overall market view, where is the advance and declines happening. So that's how, the market is positioned. Now also kind of quickly review how the basket. I mean, of course, numbers are just a disclaimer before we show it that uh, investments are subject to market risk. You have to read all the documents carefully before investing. This is no investment advice. We do research advisory, which is open-ended, which is not client specific. And we do model portfolios, which means that if you understand how it works in terms of rebalance, in terms of your risk profile, please consult your financial advisor. Any number shown on the screen is not a marketing exercise, is not to attract. The only numbers we are showing is past data, right? In terms of what has happened already. So it may have index data, it may have our baskets as well. So you see all our baskets here. You also see all the mid cap, small cap, total market, all of that. So we have seen fantastic recovery in India's financial growth theme. That is wealth wave, absolutely marvelous from 1 week perspective or 1 month perspective, right? A lot of recovery in 3 months as well. In another week, so momentum also is picking up. Alpha is absolutely picking up. Mid cap, small cap, and total market. Total market is doing very similar. Nifty 50 is also doing, 1.1 basis. I mean, slightly lesser, but overall we have seen if you just sort it by, it is showing that how, we are placed in terms of the quadrant. We are placed very, very well. Some numbers here and there absolutely will. You can of course get access to these tools in future once we make it production ready. So it's just a comparative view of that. There is a greenery turning all around, which is a great sign. Things are moving in green. Things are moving in green from a 1 year perspective as well. So value investing has been a winner so far. Of course, then momentum comes into play. I think one of the most debated small case after alpha blend is this, and this also is showing great recovery, great pickup. That's what I think the market is placed. So don't worry about drawdowns. Don't worry about kind of peak and bottoms. That's all part of the game. It's very important to show you the way the market is really standing. And I'll come back to the screen after a break of 5 minutes so that I can show you some other part of the data as well. Before I open the sheet for the Q&A, let me talk about rebalance. So rebalance में अगर आपको पता है एक बड़ा change है, एक बड़ा update है कि कंपनी का नाम तो नहीं लेते हैं. एक company, एक kind of securities company got delisted, and you have a replacement of a bank, right, in your small cases in your portfolios. And what we have done from our side is only last night the small case. I don't think if the meeting is live or not live because I can see some disruption happening. Let me see. Is the meeting live, guys? No. Because YouTube says the meeting has not started. So I don't know what does it mean. Can somebody confirm if my meeting is still on? Let me just check. Sorry, guys. I mean, when the custom streaming software I use, it is showing that meeting is not started. So that's what the confusion. Let me see if people are there and it's live.
यस लाइव लैग आ रहा है. ऑल गुड. ओके. बट लैग आ रहा है. ओके. गॉट इट. ओके. ठीक है. कोई बात नहीं. नेटवर्क तो अच्छा है. That blink that I use a LAN cable now these days because Wi-Fi sometimes do dhoka. So I use a LAN cable and LAN cable also she is blinking well. And buffering is slow हो रही है. ठीक है. Sorry for that. Um, so I was coming to rebalance. We had three baskets: prime, quality, momentum, trend masters. This is the earlier name of these baskets, and wealth wave, which is India's financial growth theme. They had that exposure to that security company, and it is replaced by a private bank now after the delisting. So we were waiting for the small case basket to show that updated what you call name. Now it is there, and therefore you may expect rebalance pretty soon, right? Today, tomorrow, on those baskets, on those three baskets. Rest other baskets were either rebalanced recently or their date is already in the system. So you exactly know, what that mean in terms of the date. From a cohort perspective, our April cohort is live. Great response to April cohort as expected because it was one of the most awaited cohort. And people were trying to also time the market. Sometime they do that. So it was a good positional kind of basket which was already live, and I think we're closing subscriptions tomorrow for that as well. That's with the rebalance. क्वेश्चन ले लेते हैं जेंसोल वाला बिफोर आई हैव टू ओपन द शीट. एक बार मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि लाइव है नहीं. लाइव है. ठीक है. तो जेंसोल जैसे कंपनी, देखिए जेंसोल या कोई भी कंपनी में यूजुअली पब्लिक फोरम पे क्यों किसी का नाम लेना है. आई ऑलवेज सी दोज फाउंडर्स एज people working. I mean, I don't know. I mean, of course, I don't know those founders directly, so I can't comment. But yeah, corporate governance, compliance, um, doing the right thing is important. And you have a lot of signs anyways, in such startups, in such companies, when you look at their financials, when you look at, when you do a very basic, what we do a start check, right? We do a 5-stage process, low network. यार ऐसे कैसे low network? We do a 5-stage process of screening the companies, and we do a very core layer of kind of fundamental analysis. And you know that we don't end up any buying such companies unless they have a good history of data and all of that. हाँ, एक ही है, एक ही कभी कभी पॉइंट आ जाता है कि जो हमारी नई नई बास्केट्स है, रूल बेस्ड बास्केट्स है, वहाँ पे समटाइम्स दोस फंडामेंटल्स आर नॉट प्रॉपर्ली चेक्ड बिकॉज दे आर टेक्निकल ड्रिवन. एंड वहाँ पे you may get kind of in such situation, but still our process is such that we do a lot of overall kind of quality parameter checks which we should avoid any such company at our side. But anyways, that's not about an individual company. Let me see if my team has given the sheet to get the questions. Network issue. I think the team is saying network issue. Let me see if I'm still live. So my team is also confirming that I'm live. Yeah, okay. Your voice is clear but no lag, but your video is buffering is slow. ठीक है, चलिए आज के लिए क्या था? I was reading some. I was reading. I was seeing one एक रील था या किसी ने मुझे बोला था, मैं भूल रहा हूँ कि fintech founder or something like doing some deep tech and a lot of fancy stuff, and then अल्टीमेटली ये होता है कि नेटवर्क ही नहीं आ रहा, मतलब सब कुछ फैंसी बना रहे हैं, एआई यूज कर रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नेटवर्क ही नहीं आ रहा, राइट? द कॉल में आवाज नहीं आ रही है, तो सारा वो सामने इट हिट्स बैक ऑन योर फेस कि भाई नेटवर्क तो आ नहीं रहा है, how will AI will be built. So that's how it is.
आई थिंक मेरी टीम भी मुझे लगातार पिंग कर रही है कि वीडियो वगैरह पॉज हो रहा है, तो कुछ नहीं कर सकता मैं अभी फिलहाल. आई मीन आई नथिंग मच आई कैन डू राइट नाउ. आई कैन ओनली much nothing much I can do, I think, right? And then so we have to just live with it. There is not no setting I can do also. So my team has also shared the link with me, which I'll open now, which has Q&A. So let me just answer those Q&A now. Okay, questions पे चलते हैं guys. So we have answered how many now? We have answered in a very structured way 700 questions. Great. Okay, नीरज जी पूछ रहे हैं, sir, what you expect the return from small case and next in alpha blend? वाह, just guess the percentage. परसेंटेज नीरज जी बोलना ऐसे पब्लिकली अलाउड नहीं है, बट एक अल्फा क्रिएट करेंगे ओवर द बेस इंडेक्स. मुझे लगता है कपल ऑफ परसेंटेज अल्फा तो जनरेट करना चाहिए ना, जिससे आपका पैसा रिलेटिवली जल्दी काइंड ऑफ एक एक्स्ट्रा रेट से बढ़ेगा. तो परसेंटेज नहीं है, बट मार्केट्स कैसा बिहेव करेंगे अगले 10 सालों में, उसके ऊपर कुछ परसेंटेज का अल्फा. मैंने एक मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग पे बहुत अच्छा सा पॉडकास्ट किया था, मैं आपको वो भेज सकता हूँ, या इस कमिटी को भी पिंग कर सकता हूँ. Those who are watching, that will give you the real example of what alpha you can expect. Priya Barta ka question regarding one company called this corporation, which is a part of this small case. It is added in the last rebalance, and now its weight has been reduced to half in this rebalance. Kindly share the reason behind such decision. Another question on auto component sector. These two companies are two good companies, but this has grown EPS or sales far superior than this, but bit expensive on P. What's your point of view on this? Should we not choose this over this? Yeah, interesting question, Priyavrata. We can always have maybe a separate discussion regarding the small case you're referring to as one session, because I see that that small case quite good and but do get ignored in the noise of others. I think it's not just one parameter which really decides us for us in terms of which company kind of beat the other in terms of the ranking we do. So we maintain a rank of a sectoral kind of strength versus growing strength and weakness. And when we have to kind of decide the overall weightage of the sector for that kind of quarter, if you think this way, that lead to say reduction in weightage, because maybe we are not very positive about that quarter as such for that sector. And within the ranking we do in terms of maintaining a list with us, we absolutely kind of have kind of parameters to you, whether it is just not just the price P multiple, but say a mix of margins, a mix of sometimes some quantitative data, which is a accumulation of multiple of these profitability metrics, valuation metrics. So maybe that company may not be qualifying in some parameters which led other company to be higher in the rank, right? And therefore this is the part. That's a very straightforward answer, I mean, and then of course we can absolutely discuss more if you like. जसप्रीत जी बोल रहे हैं, सर इस कंपनी और इस कंपनी वेट बढ़ा सकते हैं. अच्छा, आप पूछ रहे हो कि आप बढ़ा सकते हो. हाँ, अब अगर आप सेपरेटली the network is stable. Absolutely great, fantastic. Thanks, Loveleen, for confirming. जो भी क्वेश्चन है प्लीज यहाँ पे डालिए. ठीक है, अरुण अरुण जी ने डाल दिया नया क्वेश्चन, मैं देख रहा हूँ. अमित जी ने डाल दिया है. जसप्रीत पूछ रहे हैं, दो कंपनी के नाम लिया इन्होंने, क्या उनका वेटेज बढ़ा सकते हैं अलग से? देखिए, रिकमेंडेड मैं नहीं करता यूजुअली अलग से कोई स्टॉक, बट आप अगर हमारे सब्सक्राइबर हो और आप के पास एक बास्केट एक मॉडल पोर्टफोलियो है, तो एडवाइस वुड बी टू फॉलो द मॉडल एज बेस्ट यू कैन. परवेश यादव बोल रहे हैं, how doubt about rebalancing of my small case. क्वेश्चन क्या है, मतलब हाउ डाउट या हैव डाउट? ओके, क्या क्वेश्चन है, हम समझने की कोशिश करता हूँ. आगे कुछ लिखा है? नहीं, कुछ नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि हाउ डाउट अबाउट रीबैलेंसिंग. अगर आपको कोई डाउट है रीबैलेंसिंग लॉजिक को लेके, तो आप स्मॉल केस के सपोर्ट को ईमेल भेजिए. आप हमें भी सपोर्ट को ईमेल भेज सकते हैं, वी विल ऑफ कोर्स गेट योर आंसर. मिथिलेश जी ने पूछा है, हाय, I am subscriber of this for 1 year and subscribed this for 6 months. In which basket should I continue? अच्छा, दोनों ही काफी
पैरेलल बास्केट हैं दोनों का, रीबैलेंस का प्रेफरेंस अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है. I wouldn't say choose one over the other for some time, since it is just 6 months. Give it enough time, both of them. Let it be, let both of them continue. Maybe once you have seen a cycle of 1 year, 2 year, then we can decide to kind of keep, give away one. Uh, अरुण जी बोल रहे हैं, hello sir, I'm invested in this since August, and during one phone call, you advised me to remain invested for at least next 4 to 5 days. But sir, I'm still negative returns provided I topped up more. My question is, please tell, one second, reading properly. Please tell that the company in which invested really have high potential to give returns, because most of the companies are moving very slowly. अरुण जी, अभी मेरी आपसे पता नहीं कब बात हुई थी एग्जैक्टली, मे बी 1 मंथ हुआ होगा या और कम. तो अगर मैंने आपको बोला है कि आप 6-8 महीने रुक जाइए, तो फिर उसके उतना तो रुकना ही पड़ेगा. एंड question is ki please tell me that the companies in which we have invested money have great potential. Yes, absolutely, I can confirm that they have great potential. अब वो स्लो मूव हो रही हैं, फास्ट, इट्स वेरी रिलेटिव. मुझे बहुत फास्ट लग रहा है मूवमेंट, और हो भी रहा है. और कभी कभी depending on market cycle, money किधर मूव हो रही है, so those baskets are getting, are be the first beneficiaries of the move. But overall they are doing good. And just I think if हमारी बात हुई और आपको मैंने बोला है कि थोड़ा 4-5-6 महीना रुक जाइए, तो right, let's wait. Sushil, what should we do in the market at this time, and what is your view on energy transmission companies? So Varun is confirming to me also in my internal team chat that the video is very good and all good. So मेरा लग रहा है, मेरा जहाँ मैं कोवर्किंग से काम करता हूँ वहाँ पे लोगों ने सुन लिया है कि इसके बाद उनकी डांट पड़ने वाली है मेरे YouTube लाइव को लेके. तो I think they have fixed in the background. So हाँ, एनर्जी ट्रांसमिशन कंपनीज एज सच मेरा ब्रॉड कवरेज नहीं है सेक्टर पे, because we have kind of only two themes, right, which we are covering as a fund house, as a research house, I mean, which is one on the capital markets, NBFC space, housing finance and banks, and one is on the, which is India's financial growth theme, and one is on the tourism theme, right? तो हमने एज सच एनर्जी ट्रांसमिशन थीम पे काम किया नहीं है, तो वी डू नॉट हैव एग्जैक्ट व्यू on that. But companies which are a party to this and they part of our any of our factor based research, whether it is quality, whether it is momentum, they will qualify. So we don't have any problem there. Why, what should we do in this market? I mean, देखिए, मैं तो honestly अपना बता सकता हूँ, मैं तो पूरा रिकवर्ड हूँ इन टर्म्स ऑफ माई ड्रॉ डाउन. आई डोंट हैव एनी ड्रॉ डाउन, आई मीन एट लार्ज. मेरा तो अच्छा हो, क्योंकि मैं आई वाज काइंड ऑफ कोर्स एवरेजिंग, समटाइम्स एवरेजिंग हिट्स यू बैक. बट मुझे लगता है कि बहुत ही अगेन वेरी स्पेसिफिक ज्ञान हो जाता है, लेकिन एवरेजिंग इज नॉट एज बैड एज इट इज काइंड ऑफ मेड इन द मार्केट्स. डिपेंड करता है ना कि आप एवरेजिंग कब कर रहे हो, किसके कर रहे हो. आपने पैसा लगाया ही था सोच के 1-2 साल के लिए, आपने पैसा जब लगाया था तो कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे थी और सस्ती हो गई, तो ऑब्वियसली पैसा और लगा सकते हो, एवरेज कर सकते हो. आपने पैसा लगाया, कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, मार्केट ठीक ठाक है, फिर भी आपकी कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ तो एवरेज नहीं करेंगे ना, वहाँ तो फिर हम अटक जाएंगे. तो मेरे हिसाब से कि व्हाट शुड वी डू इन दिस मार्केट एट दिस टाइम इज एब्सोल्युटली रिमेन इन्वेस्टेड. I think a lot of people have made a lot of mistake in the last 6 months by doing a lot of actions. This period was not to do actions, was to just sit. जब एक्शन का टाइम आएगा तो you will see that we are taking enough actions at our side so that you have what you need to in terms of the output as when the time kind of is right. So that is where kind of questions I am answering. Another question is from Lingamurthy Ramaswamy. It says that I subscribe through a small case. Can I sell the share managed in the small case on my own decision? अरे बिल्कुल सर, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, पैसा आपका है, स्टॉक्स आपके हैं. अगर आपको लगता है कि आपको अपना डिसीजन पे बेचना है तो आप बेच सकते हो. बट आप मुझसे अगर पूछते हो कि इज इट अ गुड एडवाइस, मैं बोलूंगा कि मॉडल पोर्टफोलियो में पैसा लगाया है, फीस भी दी है, तो ट्राई करिए कि आप ऐसा करें ना, मतलब कोशिश करिए. बाकी बेच सकते हो, अलाउड है, आप ब्रोकर में जाके भी बेच सकते हो, स्मॉल केस भी बेच सकते हो आप. यू कैन ऑलवेज डू पार्शियल एग्जिट एंड फुल एग्जिट, बट क्यों करना है? आई डोंट थिंक इट इज द अप्रोच.
ओवरऑल कैपिटल का 75% अमाउंट अगर अल्फा में ऐड करने से कितने परसेंट कैगर से ग्रो करेगा नेक्स्ट 10 to 13 years? वाओ, व्हाट्स अ गुड क्वेश्चन, समझ में नहीं आया मुझे। ओवरऑल कैपिटल का अगर 75% आप लगाओगे अल्फा में, ओके, आई मीन अल्फा ब्लेंड में, अल्फा मोमेंटम फ्यूजन में, उन दोनों में किसी एक में, तो कितने परसेंटेज कैगर से ग्रो करेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, वही मार्केट जिस कैगर से ग्रो करेगा, मेरा आइडिया है कि आई मीन अवर ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट सम अल्फा ओवर द मार्केट। नंबर तो किसी को मालूम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई क्लेम ही करेगा तो नो बडी हैज सीन द फ्यूचर। लेकिन मुझे लगता है एक ब्रॉड मार्केट इंडेक्स अगर ग्रो करेगा एक रेट पे, तो जो आपका फोकस्ड एक्टिव मैनेजमेंट कैपिटल का होता है वाया मॉडल पोर्टफोलियो, I think it should be able to generate some alpha over it, some percentage of alpha, which we have discussed as part of our. अगर अंकित को या कोई भी मेरे समय चैनल को एक्सेस कर पा रहा है, तो if they can ping that podcast which I did on multi-factor investing, मैं खुद ही सर्च करके एक्चुअली पिंग कर देता हूँ। गुड क्वेश्चन, क्योंकि समझ नहीं आया। नहीं, सच में नहीं आया, लेकिन मैं एक वीडियो पिंग कर रहा हूँ आप लोगों को। सो ये मेरा वीडियो थोड़ा सा आप लोग भी आगे ले जाइए। मैंने काफ़ी मेहनत से 2 घंटा बोला था एक चैनल पे जाके, अल्टीमेटली वो वीडियो तो बस 24 मिनट का ही बना, मतलब 24 मिनट्स का ही उन्होंने बना, एडिट करके दिया है। बट इट टॉक्स अबाउट गुड डेटा पॉइंट अराउंड मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग, अराउंड हाउ मच अल्फा over the indexes you can create, what are the products which are available in the market which are not. So अगर आप देखोगे ना ये वाला वीडियो मेरा, तो आई थिंक इट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अच्छा करेंगे, आज अपने ग्रुप में भी ये वीडियो फिर से भेज देंगे, बिकॉज लॉट ऑफ न्यू पीपल हैव जॉइन आवर ग्रुप्स, so we can absolutely send in our group as well. बाकी मैं देख रहा हूँ ईमेल्स पे काफी आजकल एक्टिविटी चल रही है, आप लोगों को बहुत व्हाट्सएप आ रहे होंगे। We are doing some good work. My team is working very hard to make sure that आपको अपडेट्स मैनेजर अपडेट के थ्रू मिलें, ईमेल्स के थ्रू मिलें, सो दैट कुछ भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो दैट इज आवर एफर्ट कि आप इंक्लूसिव फील करो, इन्वॉल्व फील करो पूरे जर्नी में, बिकॉज बहुत टफ टाइम निकला है राइट सबका। दोबारा क्या होगा मार्केट में, एक्चुअली नोबडी नोज, दैट वी ऑल नो दैट नोबडी नोज, बट वी विल गिव इट इनफ टाइम। एंड मैं काफ़ी लोगों ने मुझे सवाल पूछा कि अब मेरी रिकवरी हो गई है, अब मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ मार्केट से कि दोबारा नहीं आऊँगा, क्या मैं अपना पैसा निकाल लूँ? देखिए चॉइस आपकी है, ओनली बिकॉज मनी आपका है तो चॉइस तो आपकी है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा है पर्सनल है कि मार्केट के बाहर रहने से तो क्या ही पैसा बनने वाला है आपका। और मार्केट जब आप आए थे तो नेट नेट तो ना करने आए थे, खाली फन के लिए नहीं आए थे राइट, इट वाज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड। और अब वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अगर ट्रू है तो थोड़ा सा तो रुकना पड़ेगा। ये भाई साहब पूछ रहे हैं, श्रीधर जी, कैन वी प्ले स्टॉप लॉस फॉर स्मॉल केस स्टॉक्स? नहीं नहीं नहीं, सो आई डोंट थिंक any discretionary fundamental driven data driven basket can have stop loss for every stock. Of course we have different baskets designed for different purpose. Some are equity only, some are multi asset, some are rule based. There are few baskets where in a way technically there's a stop loss, right, and it will be cut down or move to cash, but all my discretionary baskets are pure equity baskets. ठीक है, गुड है। सो और क्या क्वेश्चन लेना है? हो गया, आई थिंक वेरी नाइस, आई हैव आंसर्ड। अमित जी बोल रहे हैं गुड क्वेश्चन क्योंकि समझ नहीं आया। एम मिस्टर बी टू बोल रहे हैं टोटल कैपिटल इज इतना 5 लाख है, स्मॉल के देना चाहिए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड तो सही है ही ना, सब कहते हैं, अब सब कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है तो सही होगा, तो फिर मैं क्या बताऊं कि क्या लेना चाहिए। लेकिन आई थिंक मजाक कर रहा हूँ, क्वेश्चन का को आप थोड़ा सा ना ब्रेक करिए, क्वेश्चन आपको थोड़ा मैंने हमेशा बताया है म्यूचुअल फंड में से यू कैन एक्चुअली एंजॉय द रियल वैल्यू ऑफ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कॉन्सेप्ट होता है कि माल सस्ता हो रहा है, महंगा मिल रहा है, आपको मिल रहा है, उसका यूनिट मिल जाता है, तो डॉलर तो जो भी गोल बेस्ड आपका ना, कोई कार खरीदनी है इतने सालों के बाद, ये खरीदना है, बच्चे की शादी करनी है, तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, इंडेक्स में लगाइए आराम से, मेरे ख्याल से लगाइए ही लगाइए। Small case is more of, I think, a goal which is more of wealth generation goal, little long-term goal, lump sum investment. I think that is how you can structure it in your mind. Any idea when will small and mid cap return to old levels? Idea मेरा ऐसा नहीं है, और मुझे कि
अगर मैं अपने लेवल पे बोलूंगा कि आई थिंक, तो वो एक्चुअली में टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज ओनली लिमिटेड टू आई थिंक, क्योंकि नोबडी नोज द रियल आंसर। मुझे लगता है एक और क्वार्टर बचा है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, एक और क्वार्टर बचा है। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, आप देख ही रहे हो, रिजल्ट बेटर आना शुरू हो गए हैं कंपनीज के। एक और क्वार्टर देख लेते हैं आई थिंक, जहाँ पे हमारा पुराना जो हमने, अगर आप सैटरडे मेरी जूम मीटिंग में थे तो आई हैव शोन यू व्हाट वाज द पिक्चर लास्ट ईयर, राइट? आई थिंक वो पिक्चर अभी तो मैं आई थिंक आई रिजर्व इट फॉर माय सब्सक्राइबर्स एंड जूम, बट मैंने आई थिंक आपको दिखाया था वो डेटा कि हाउ द मार्केट was in July August and how market we look forward, but now we are seeing lot of orange, as I said। मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्क्रीन एक बार फिर भी before I finish। so मैं आपको एक बार क्विकली ये एक स्क्रीन दिखा देता हूँ बिफोर आई वी क्लोज दिस सेशन, विच आई हैव शोन इट टू माय टीम, बट आई थिंक वो हुए भी 4 दिन हो गए। So just we, as I said, we like orange dots, we like green dots. Oh wow, green dots. Excellent. We like yellow dots. We don't like red dots. So this is where we see green dots are coming. And we want a view which was exactly like all greenery last year, somewhere here. If you remember, we were absolutely green, 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 and all over we were, except say SME space, we were so green everywhere. So we're looking for such kind of markets. We're looking for markets to show all of that good stuff to us. And once we have that, we will absolutely be in line with what market is doing. Can small cases beat mutual funds in 2025? Now, very, very, I mean, how do I put it? आप ऐसा सोचो, 500 स्मॉल केसेस हैं कम से कम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 500 तो होंगे, आई एम जस्ट गेसिंग द नंबर, बट 500 तो है। 5000 म्यूचुअल फंड्स हैं। I don't think it is a question which is directly related and I can be answered. Some small case will beat mutual fund, some mutual fund will beat small case, because 5000 6000 mutual funds हैं, 500 small cases हैं, there is no direct comparison. So depend करता है आपको किसका exposure चाहिए, long cap, mid cap, small cap, multi cap, multi asset, equity and gold, equity, debt, and all of that, right? It will depend on that, and index and broad market and micro cap, all of that, right? So absolutely, the thing you select would decide, whether the goal you have will decide which one will suit you more. अच्छा, मेरा हो गया जी, 1:30 का मेरा टारगेट था। 4 minutes I have spent additionally, which is good. And I am seeing a lot of emails now flying to us, which is absolutely great. So good job, all of you, that you have started to now focus more on your small cases. सर म्यूचुअल फंड 1 साल का पीरियड नहीं पता, बट ओवरऑल 2025 तो देखिए, म्यूचुअल फंड तो बहुत सारे हैं ना, तो मुझे पता नहीं आप किस कैटेगरी पे, बट अपनी कैटेगरी का जो रिस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड है, कोशिश तो करेंगे कि एक अल्फा जनरेट करें, लेकिन वो है ना, 1 ईयर तो बहुत शॉर्ट पीरियड होता है टू डिटरमाइन। बट हाँ, हमारी कोशिश तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो इंटेंट है, इंटेंट इज ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मनी, राइट? मॉडल तो अगर आप जो मैंने ऊपर लिंक दे भेजा है जो मैंने, वो अगर आप पॉडकास्ट देखोगे तो यू विल रियलाइज की साइकिल्स होती हैं, साइक्लिकलिटी होती है, तो जो थीम बेस्ड साइक्लिकलिटी होती है वो एब्सोल्युटली एवरीबडी सेइंग यहाँ कि हे भगवान, मुझे मेरा पैसा वहां लगाने की सद्बुद्धि दो जहां पैसा सबसे ज्यादा बनेगा। सब जगह बन जाएगा, टाइम होराइजन अलग अलग होगा, वॉलेटिलिटी अलग अलग होगी, आपका बीपी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से फ्लक्चुएट करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको रात की चैन की नींद आने दे, इन टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पैसा तो हर जगह बन जाएगा, पैसा तो बन ही जाएगा। अगर आप, जब इन्फ्लेशन ही इतनी है हमारी कंट्री में, जब बैंक ही आजकल 7.2 देने लगे, अब तो क्या रेट्स कट हो गए तो 7.7 7.8 से अब 7.2 पे आ गया। हाँ, तो सौरभ पूछ रहे हैं कि आप इतना बोलते हो अल्फा करेंगे, अल्फा करेंगे, क्या होता है अल्फा? अल्फा, ओके, गूगल पे पूछते हैं व्हाट इज अल्फा। गूगल से पूछेंगे हम आपके सामने, या चैट जीपीटी से पूछेंगे आपके सामने। गूगल, व्हाट इज अल्फा इन स्टॉक मार्केट? व्हाट इज अल्फा इन स्टॉक मार्केट? अरे गलती से जापान का गूगल खुल गया मुझसे।
देखिए एक बार स्क्रीन दिखा देते हैं बिफोर आई फिनिश। जापान जेपी खुल गया कुछ। आई थिंक आई एंडेड ओपन अप सम अदर कंट्री वेबसाइट जापानीज गूगल गलती से वो टाइप हो गया। इन नहीं खुला, जेपी खुल गया, जापान होगा। So in stock market, alpha is a measure of an investment performance compared to benchmarks such as the overall market. It represents the excess return generated by an investment beyond what would be expected based on volatility and the market performance. Essentially, alpha quantifies how much an investment is outperforming or underperforming the benchmark. बस वही है कि in context of actively managed fund, alpha is often seen as a reflection of the manager's ability to select stocks that generate outsized return. समझ गए आप? हमारी एबिलिटी कि हम क्या स्टॉक सेलेक्ट करें कि वो आपके बेंचमार्क्स को आउटसाइज कर पाए या उनसे जनरेट एक्स्ट्रा कर पाए, वही होता है अल्फा। दैट्स अल्फा, नथिंग एल्स। परसेंटेज के टर्म में आप मेरा ऊपर वाला पॉडकास्ट देखो, थोड़ा व्यूज व्यूज बढ़ाओ मेरे जाके, वहां पे अभी 13,000 ही व्यूज है। 13,000 इज टू लेस, 13,000 इज टू लेस अ व्यू फॉर सच काइंड ऑफ पॉडकास्ट। थोड़ा सा पॉडकास्ट का व्यू बढ़ाइए, तब आपको हम बताएंगे। आई कैन सी, थोड़ा सा देखिए वो वाला पॉडकास्ट अच्छा बनाया है मैंने, काफी मेहनत करके वो वो दिया था वहाँ पे सेशन, और वहाँ पे थोड़ा इंटरेक्ट करिए। काफी अच्छे कमेंट्स आए थे उस वाले वीडियो पे, लोगों ने बहुत तारीफ करी थी। तो आप थोड़ा सा आप भी देख लीजिए, हम भी खुश हो जाएंगे। सौरभ जी। ओके गाइस, that is all for today. Hope you liked and it was useful. I have answered all the questions. I'll speak to you this Saturday in our Zoom meeting. Please, you are getting invites for our community. If you're not a member, please reach out to my team. You are also, we have of course, have done the cleanup. There were 300 people who joined us without being a valid subscription. So we had to unfortunately let them go. Sorry for that. And there are few people who didn't have any clue why they are here. Somebody added them or somebody shared the link with them. So please don't do such things. All right. And any questions, speak to me, to my team. Always they are available to answer all the questions. Okay. I'll call it a stop. Take care, everybody. Cheers. Have a good day. Bye.